जेको गुज़िरियल लेक्चर हुयो उहो कॉन्स्टिट्यूशन छा आहे, कॉन्स्टिट्यूशन छो हुजे ऐं हुनजे थोरो बैकग्राउंड जे बारे में हुयो। अॼु असां कॉन्स्टिट्यूशन जे पार्ट 1 खे ॾिसंदासीं। पार्ट 1 में पहिरियां आर्टिकल जेको फर्स्ट आहे उहो चए थो त पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक नॉन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। हिन में ॿ टे शयूं आहिनि जेके गौर तलब आहिनि। फर्स्ट इज़ फेडरल, second is republic, third is Islamic. So we have in Pakistan decided in the constitution that we will be a federal country, a central government which will be formed by units, federating units. And federating units we know are the provinces. Now we have to understand the difference between a federal system of governance and a unital system of government. In unital systems, there is only a one government, a central government, which has all the powers. Then the units will be given limited powers delegated by the federal government. Sometimes it is sometimes put it as divided form of government. There is very thin difference between divided form of government and unital form of government. Then we have a federal system of government that we have in Pakistan. In federal system of government, the federation is constituted of autonomous bodies. Autonomous bodies like provinces, जीअं असांजो सिंध सूबो आहे या पंजाब सूबो आहे या ख़ैबर पख्तूनख्वा आहे, बलोचिस्तान आहे, इन सभिनी सूबनि खे हिकिड़ा डिफरेंट अख़्तियार्स डेलीगेट थियल हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि वटि हिकिड़ा पंहिंजा कॉन्स्टिट्यूशन जे तहत उन जा पंहिंजूं गवर्नमेंट्स हूंदियूं आहिनि, उन जूं पंहिंजूं गवर्नमेंट जा हेड हूंदा आहिनि ऐं पंहिंजा डिफरेंट इदारा हूंदा आहिनि। प्रॉब्लम तॾहिं थींदो आहे जॾहिं फेडरल यूनिट्स फेडरेशन खे पावर जो हिकिड़ो टग शुरू थी वेंदी आहे ॿिन्ही जे विच में। यानी फेडरेशन चाहींदी आहे, फेडरल गवर्नमेंट चाहींदी आहे त असां वटि अख़्तियार घणा हुजनि ऐं ऑटोनोमस यूनिट्स वटि अख़्तियार घटि कया वञनि त जीअं ऑटोनॉमी अफेक्ट थिए। इन सूरत हाल में हमेशह फेडरेशन पाण कमज़ोर थींदी आहे। जॾहिं तव्हांजा फेडरेटिंग यूनिट्स मज़बूत हूंदा, स्ट्रांग हूंदा, फेडरेशन स्ट्रांग थींदी। ॿियो हिकिड़ो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थींदो आहे कॉन्फेडरल फेडरल, जंहिंमें जेके इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स हूंदियूं आहिनि उहे तमामु लिमिटेड पर्पज़ जे लाइ हिकिड़ी फेडरल अथॉरिटी स्टैब्लिश कंदियूं आहिनि, जंहिंजो हिकिड़ो बहितरीनु मिसाल हिन वक़्तु मौजूदा दुनिया में आहे यूरोपियन यूनियन। यानी EU जे अंदरि different countries have signed a treaty, that is a treatise function, and every treaty has agreed on few fundamental powers to be delegated. सभिनी EU जे कंट्रीज़ जूं पंहिंजूं गवर्नमेंट्स आहिनि, पंहिंजा निज़ाम आहिनि, पंहिंजा सिस्टम्स आहिनि, पर उनजो हिकु we can use the same currency, euro can be used within the EU nations. Likewise, we will have a
यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, फेडरल कोर्ट, यूरोपियन सभिनी स्टेट्स जी हुई, या टैक्सेस वग़ैरह, ट्रेड ऐं सेल परचेज विद इन दी स्टेट्स विल बी लाइक इट इज़ डन विद इन ए वन कंट्री. This is a confederal concept of governance. We have federal system of governance like we have in USA. Confederal states USA में बोयूं साउथ वाले हिस्से में जिनमें टेक्सास, साउथ कैलिफोर्निया, these were the states who had fought against USA, and then they were then acceded. So we have to understand the prime object that the farmers of Constitution thought was to have a federal entity in Pakistan. That means the provinces should have autonomy in their functions, subject to very limited powers which are retained with the federal government. In this, in the history, we have seen that the provinces and federation has always come to disagreement when it comes to the autonomy of provinces. Even today, many provinces in Pakistan, such as including in Punjab, have at one stage in time challenged the federal government that you are encroaching on our autonomy. Now, another aspect that we have to see is the republic. There is a difference in a republic form of government and a democratic form of government. In both these systems, power is derived through people. But in republic form of government, majority will have the power to decide things, subject to limitations prescribed in the constitution, or the purpose is that a republic state will not have a might and right if it is a majority. It will be subject to certain limitations. Those limitations are prescribed to protect individual rights, to protect minorities. These are the concepts derived from the objective resolution. These are the concepts derived from the very movement which demanded Pakistan when Britishers were leaving. So at that time the demand was त भाई मुसलमाननि जे लाइ हिकिड़ो मुल्क ठाहियूं जिते मुसलमान अक्सरियत में आहिनि उते हिकिड़ो मुल्क हुजे, उनजो सेपरेट मुल्क हुजे, पर उते माइनॉरिटीज़ सां ज़ुल्म न थिए, इंडिविजुअल राइट्स खे प्रोटेक्ट कयो वञे. इहे रिपब्लिक डिमांड ऐं फेडरल डिमांड इहा ओरिजिनल डिमांड आहे जेका असांजे मुल्क जे नाले में शामिलु कई वई. डेमोक्रेसी जेका सिर्फ़ु डेमोक्रेसी हूंदी आहे, दैट इज़ वेयर यू हैव मेजॉरिटेरियन say. Whoever is in majority, whether it is right or wrong, it can take away anybody's right, it can infringe minorities. That is majoritarian, that is simple democracy. We don't have a simple democracy in this country, we have a republic democracy. You can say Pakistan is a Islamic republic democracy. Now there is another term, that is Islamic. This is a very rare term used in the names of countries. It is also a concept derived from the very movement which demanded Pakistan. भाई मुसलमान जे लाइ मुल्क है, and it has to be a Muslim state. It is primarily formed for the Muslims because the demand was जिते मुसलमान अक्सरियत में आहिनि बरे सगीर में उन्हनि जो हिकिड़ो धार मुल्क हुजे.
इन जे करे इस्लामिक उन जो ॿियो इफेक्ट इहो आहे त असांजो जेको ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन आहे, जेको रेज़ोल्यूशन 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास कयो लियाकत अली खान जे टाइम में, which is also part of this constitution preamble भी उन खे स्पेसिफाई करे थो ऐं सेक्शन आर्टिकल 2A स्पेसिफिकली चए थो त ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। छाकाणि त हिकिड़ी अहिड़ी स्टेज हुई जंहिं स्टेज ते इहो हिकिड़ो यानी बिफोर 1985 डिबेट हुई त बाबा ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन और preamble is not part of constitution, it is not substantive part of constitution, it is not the article, like we say भाई कहिड़े सेक्शन में इहा शइ प्रोवाइड थियल आहे, कहिड़े आर्टिकल में इहा शइ लिखियल आहे, बिकॉज इट वाज़ नॉट सो। इहो सिर्फ़ु प्रीएम्बल में हुयो ऐं कंहिं स्पेसिफिक सेक्शन में हिन शइ जे बारे में डिस्कशन न हुई। त जॾहिं इंटरप्रिटेशन थींदी हुई ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन खे इम्प्लीमेंट करे सघिजे थो, पाकिस्तान में कोर्टूं इंटरप्रेट करे सघनि थियूं या नथियूं करे सघनि, इहो हिकिड़ो आर्ग्यूमेंट रेस थींदो। देन इन 1985 अमेंडमेंट करे ऐं आर्टिकल 2A एड कयो वियो जंहिंमें इहो चयो वियो त ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन इज़ दी पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाणे अगरि असां ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन खे ॾिसूं त विच इज़ एन अनेक्स टू दी कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उन में भी सेम उसूल आहिनि, लेंथी वन पेजर रेज़ोल्यूशन। प्राइमरीली इन में जेके अहम पॉइंट्स आहिनि दे आर द सेम जेके असां हाणे डिस्कस कयूं। त जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान खे इंडिपेंडेंट स्टेट हूंदो ऐं पावर या अथॉरिटी हुन जा चूज़न रिप्रेज़ेंटेटिव्स जे थ्रू माण्हू एक्सरसाइज कंदा, मुसलमाननि जी लाइफ खे गुज़ारण जे लाइ आसानियूं पैदा कयूं वेंदियूं ऐं फैसिलिटेट कयो वेंदो। इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस जेके इस्लाम में ऑब्ज़र्व कया था वञनि उहे पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व कया वेंदा। ऐं हिकिड़ी ॿी हुन में शइ माइनॉरिटीज़ जे लाइ हुई त एडिक्वेट प्रोविज़न कयो वेंदो माइनॉरिटीज़ जे लाइ त उहे पंहिंजो रिलीजन प्रोफेस कनि, प्रैक्टिस कनि ऐं पंहिंजे कल्चर खे डेवलप कनि। अॻ में लफ़्ज़ जेको यूज़ थियल हुयो ओरिजिनली रेज़ोल्यूशन में वो हुयो वेयर इन एडिक्वेट प्रोविज़न फॉर shall be made for the minorities to profess and practice their religions and develop their cultures. Then in 18th amendment हिकिड़ो वर्ड एड कयो वियो freely, and now it reads adequate provision shall be made for the minorities to freely profess. इहा बि हिकिड़ी वेलकम अमेंडमेंट चइजे त जीअं मिनॉरिटीज़ खे जेको फ्रीडम टू द मिनॉरिटीज़ हुयो उनखे वधीक इलार्ज कयो इन हिकिड़े लफ़्ज़ एड थियण सां 18 अमेंडमेंट में। इन फंडामेंटल राइट्स जो ज़िक्र आहे उन में। ऐं ॿी हिकिड़ी शइ आहे जेका आम ॻाल्हि आहे with respect to equal treatment, with respect to discrimination, the objective resolution as well as our constitution जा जेके substantive provisions and which is now a substantive part of the constitution provide for positive discrimination for minorities, backward and depressed classes. छाकाणि त पाकिस्तान हिकु अहिड़ो मुल्क आहे जिते खोड़ अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके काफ़ी ॾूरां चऊं या बैकवर्ड चऊं या पोइते पियल चऊं, जिते तरक़ियाती कम डेवलपमेंट्स रिसोर्सिस गॾु न आहिनि थियल। उन्हनि खे उन वक़्त जा लॉ मेकर सम्झनि पिया त अपलिफ्ट करण जी ज़रूरत आहे ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे अपलिफ्ट करण जे लाइ के प्रोविजन्स ठाहिया वञनि कानूननि में या गवर्नमेंट जी पॉलिसीज़ में या एग्ज़ीक्यूटिव जे अख़्तियारनि जे इस्तेमाल में उनखे को माण्हू चैलेंज न करे त दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। को ॿियो जेको डेवलप्ड एरिया जो माण्हू आहे या बहितर इलाइक़े जो जेको हिन मुल्क में माण्हू आहे उहो अचे चैलेंज करे बैकवर्ड एरियाज़ जे लाइ इहे जेकॾहिं पर एज़ एन एग्ज़ाम्पल था वठूं त हिकिड़े माण्हू ते अगरि रुपयो बजट रखी वई आहे
शहरी माण्हूअ जे लाइ या डेवलप्ड माण्हूअ जे लाइ, जिते डेवलप्ड इलाइक़ा आहिनि उतां जे लाइ, त ही वरी बैकवर्ड इलाइक़नि में बजट ॿ रुपया था रखनि, इहा हिकिड़ी डिस्क्रिमिनेशन आहे असां सां। इन शइ खे कैटर करण जे लाइ दे created space within the constitution for positive discrimination so that backward areas can be uplifted and they may be brought at par with other areas. जंहिंजो हिकिड़ो वॾो मिसाल आहे असां वटि कोटा सिस्टम। जीअं कोटाज़ आहिनि, रूरल अर्बन माइनॉरिटी कोटा, ऐं उन खां पोइ स्पेशली एबल्ड पर्सन्स जूं कोटा आहिनि। दीज आर ऑल positive discriminations permitted in the constitution to uplift those people, those areas, to make a level playing field. उन खां पोइ कॉन्स्टिट्यूशन जे हिकु ॿी ॻाल्हि आहे त बाबा efforts will be made to eliminate the exploitation. Exploitation is a very broad word. This is also to supplement the positive discrimination. For example, को माण्हू आहे जेको एतिरो सघारो नाहे जेतिरा ॿिया माण्हू सघारा आहिनि, त उनखे इग्नोर नाहे करणो, उनखे छॾे न ॾियणो त जीअं उहो एक्सप्लॉइट थिए, या उन इलाइक़े खे छॾे न ॾियणो, या उन क्लास ऑफ पीपल खे छॾे न ॾियणो, उन्हनि जी एक्सप्लॉइटेशन खे ख़तमु करिणो आहे त जीअं उन्हनि खे वधीक वे ऑफ लाइफ रेगुलर ज़िंदगीअ में मिली सघे। इहो शरई उसूल बि आहे ऐं इहो आम सुठे माहौल जो बि आहे। असां पंहिंजे घर में अगरि को असांजे घर में को फ़र्दु हूंदो आहे जेको ॿियनि फ़र्दनि जेतिरो होशियारु, ज़हीन, महिनती, कमाऊ नाहे, उनखे घर जा मेंबर छॾींदा न आहिनि, उन्हनि जी वधीक वाहर कंदा आहिनि त जीअं उहो माण्हू बि ॿियनि फैमिली मेंबर्स वांगुरु ज़िंदगी गुज़ारे, उनखे फैसिलिटेट कयो वेंदो आहे। ऐं उन खां पोइ आहे त हर माण्हूअ खे राइट आहे त उहो कानून जे मुताबिक़ उन सां डील कजे, कानून जी प्रोटेक्शन इंजॉय करे। ईअं न थिए त को माण्हू हिकिड़े जे लाइ चवे त हिन खे कानून जा हक़ न आहिनि। मिसाल हिकिड़ो इन जो एग्ज़ाम्पल असां ॾियूं त every person has a right to be dealt in accordance with law, even if that person is disliked by us. यानी को हार्ड क्रिमिनल हुजे या अहिड़ो माण्हू हुजे जंहिंसां जंहिंजे अमलनि जे करे हुन सां नफ़रत थिए, तॾहिं बि कॉन्स्टिट्यूशन हुनखे प्रोटेक्शन ॾिए थो त ही इज़ ऑल्सो इंटाइटल्ड टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। साॻी सूरत हाल में अगरि को ॿियो माण्हू बि आहे त उनखे उहो ई डील करणु घुरिजे, ऐं उन्हनि जा जेके राइट्स आहिनि उहे एवरेज न थींदा, उनजा राइट्स ख़तमु न थींदा। ॿिए घड़ी चवणो आहे हिकिड़ो दहशतगर्द खे बि हक़ु आहे त फेयर ट्रायल मिले। These are all securities given, protections given to every person, every citizen in Pakistan, and even any other person for the time being in Pakistan. So ईअं बि नथो चई सघिजे त because he is not citizen, therefore he is not entitled to the protection of law. So whether he is citizen or not, for the time being he is in Pakistan, he is entitled to the protection. इहे ई तरीक़ा आहिनि हिकिड़े सिविलाइज़्ड माहौल जा, सोसाइटी जा, मुल्कनि जा, त उहे सभिनी खे सुठी प्रोटेक्शन ऐं हिकिड़ी बराबरी जी हदनि ते रखनि। ईअं न त ॿियनि खे धारियो करे ऐं उन्हनि सां प्रॉपर कानून जे तरीक़े सां रवैयो अख़्तियार न कयो। पोइ आहे त हर शहरी जी जेका लॉयल्टी आहे उहा पाकिस्तान सां हूंदी, स्टेट सां हूंदी, उहा हुनजी ड्यूटी आहे हर शहरीअ जी। एक्सचेंज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मां कल्ह हिकिड़ी डिस्कशन कई त दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पीपल एंड द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एन एग्रीमेंट, मास्टर एग्रीमेंट चऊं या प्राइमरी एग्रीमेंट चऊं, बिटवीन पीपल एंड द स्टेट अमंगस्ट ईच अदर। हाणे छाकाणि त माण्हुनि खे खोड़ सारा हक़ ॾिनासीं,
सिक्योर कयोसीं, मज़हब, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, जेके बि ॻाल्हियूं थियूं, राइट्स, एक्सप्लॉटेशन खां बचायोसीं। हाणे उन्हनि सभिनी जे मथां हिकिड़ी ॿी रेस्पॉन्सिबिलिटी बि रखूं था, दैट इज़ ऑब्लिगेशन रखूं था। तव्हांजी लॉयल्टी हमेशह स्टेट सां हूंदी। तव्हां कंहिं बि स्टेज ते कंहिं बि पोज़ीशन ते अची करे इहो नथा चई सघो त हाणे मां हिन स्टेट सां लॉयल न आहियां या इन जे स्टेट जे ख़िलाफ़ को कमु कयां। ऐं पोइ वरी हिकिड़ो आहे आर्टिकल हाई ट्रीज़न जो, ऐं जेकॾहिं उहो कॉन्स्टिट्यूशन खे एब्रोगेट करे या हुनखे मदद करे उन कमु करण में, कॉन्स्टिट्यूशन खे एब्रोगेट करण में हुनजो साथारी थिए, त उनजे लाइ हाई ट्रीज़न जी सज़ा हूंदी ऐं उहो वॾो ॾोहारी आहे, सख़्तु सज़ा आहे हुनजी। डेफिनेशन आहे स्टेट जी ॾिनल उन खां पोइ पार्ट 2 में, that is in this part unless the context otherwise requires, a state means federal government, majlis shura, parliament, a provincial government। इहो हिकिड़ो academic खणी चइजे त article आहे to properly understand other portion of this part। इन ते घणी डिस्कशन करण में को फ़ाइदो कोन्हे को। The laws inconsistent or in derogation of fundamental rights to be void। उहे कानून जेके असेंबली ठाहे ऐं उहे कॉन्स्टिट्यूशन सां या हिन में लफ़्ज़ ॾिसो ॾाढो ध्यान जी ॻाल्हि आहे, it does not say in contradiction with, inconsistent with the constitution। यानी कोई कानून जेकॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन सां कंफ्लिक्ट में आहे त उहो वॉइड हूंदो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ईअं न आहे लिखियलु हिन में लिखियलु आहे त फंडामेंटल राइट्स सां जेकॾहिं को इनकंसिस्टेंट हूंदो। हाणे जेका असांजी एकेडमिक डिस्कशन आहे, मुंहिंजे व्यू में, इन माय व्यू, even if this article was not in the constitution, still any law inconsistent with the constitution should be treated as void। And an example I, this article 8 only speaks about inconsistency with fundamental rights। Fundamental rights are from article 9 to article 28। That means this parliament can make a law which is inconsistent with article 29 or say any other article in the constitution। No, in my opinion it is not the case। अगर ईअं हुजे त पोइ असां जेके आर्टिकल डिफरेंट कोर्टूं इंटरप्रेट कंदियूं आहिनि 212 या पंहिंजो अॼुकल्ह जेके असांजा 199 आहे या ॿिया मशहूरु आर्टिकल्स आहिनि असांजा 185 आहे, उन खां सवाइ 62 आहे जंहिं ते वॾी हिकिड़ी बहस थींदी आहे मेंबर्स जी क्वालिफिकेशन छा हुजे, सुठो माण्हू छा आहे, इहे जेके शयूं आहिनि त उन्हनि खे छो थी उन्हनि कानूननि खे कोर्टूं उनखे छो थियूं रिपग्नेंट ऐं वॉइड कनि, अल्ट्रा वायरिस कनि। they although try to connect it with the fundamental rights, या fundamental rights जी violation आहे, पोइ इन ई connection जे चक्कर में we have enlarged the scope of fundamental rights so much that ये हर शइ right to life में include करे छॾी आहे। Interpretations अहिड़ियूं थियूं आहिनि, anything, almost everything that is in consistency with some of the provision of the constitution is included somehow in the connected with the fundamental rights, mainly the right to discrimination, right to life, right to equal treatment, or right to be dealt with in accordance with law। इन्हनि सां कनेक्ट करे उनखे मिड़ई पोइ कमु हलाईंदा आहियूं। पर I think that there was no need to include this article because इहा हिकिड़ी फंडामेंटल लीगल अंडरस्टैंडिंग आहे। तव्हां सभु कानून जा शागिर्द आहियो, सम्झो था जेकॾहिं पेरेंट स्टेचू सां काई बि शइ इनकंसिस्टेंट हूंदी आहे to the extent of inconsistency to the parent state is ultra vires। अहिड़ी तरह कॉन्स्टिट्यूशन असांजो फंडामेंटल एग्रीमेंट आहे, फंडामेंटल कानून आहे, बाय लॉ आहे, त पोइ एनी एक्ट
any law that is made inconsistent with any part of the constitution would be considered ultra vires. पर हिननि framers of the constitution हिनखे थोरो limit कयो आहे. They have tried to limit it, which I think should not have been done, but it is what it is. We have, like, they actually gave a specific power to the courts in writ jurisdiction to enforce the fundamental rights within limitations prescribed in Article 199 ऐं उनजी जेको पहिरीं मटीरियल आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जा अख्तियार आहिनि. But they specifically mentioned in the about non-enforceability of principles of policy. They will not, although government should follow these principles of policy, but they are not specifically enforceable. इहो वरी उन्हनि विषय में लिखी छॾियो. So these are the situations, these problems come up when your fundamental agreement is so big and complex. कल्ह असां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त असांजी छाकाणि त सिटीज़न्स जी या सूबनि जी या शहरनि जी हिक ॿिए ते लैक ऑफ ट्रस्ट जे करे असां एॾो डिटेल्ड एग्रीमेंट करे छॾी आहे जो इन मां पोइ इहे कॉम्प्लेक्सिटीज़ नेचुरली अराइज़ थियणियूं आहिनि जेके थियनि थियूं पियूं असां ॾिसूं था. इहे न थियणु खपे अगरि जेकॾहिं असां हिनखे वधीक सिंप्लीफाई करे ठाहियूं आहे. Then we have the fundamental rights, उन्हनि में security of person, right to life. No person shall be deprived of his life or liberty save in accordance with law. यानी जीअं असांजी हिकिड़ी jurisprudence में डिस्कशन थींदी आहे त उहा सज़ा जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू आम फर्द मारे थो त उहो कातिल आहे, पर जेकॾहिं कोर्ट जे थ्रू उनखे फांसी जी सज़ा ॾेई ऐं सरकार हैंग करे त उहो कातिल कोर्ट नथी थिए या उहो कातिल सरकार नथी थिए. These are the ways to take away life or liberty through law. So our constitution has provided this space that you can curtail liberty of people if they violate laws, and then you implement the law on them through different functionaries. ऐं उन खां पोइ क्लीन ऐं हेल्दी इन्वायरमेंट इहो 9A ऐं हाणे रिसेंटली विधो आहे पंहिंजो 26th अमेंडमेंट में परहैप्स सम ट्रीटीज़ पाकिस्तान जूं थियूं आहिनि इंटरनेशनल, जेको अॼुकल्ह ग्लोबल वार्मिंग ऐं इहे शयूं हलनि थियूं उन हिसाब सां हिनखे क्लीन हेल्दी ऐं सस्टेनेबल इन्वायरमेंट डेवलप करणा आहिनि. सेफ गार्ड एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कंहिंखे बि तव्हां ईअं अरेस्ट नथा करे सघो. अरेस्ट खे सम्झण जी ज़रूरत आहे, डिटेंशन खे. त व्हाट इज़ अरेस्ट? The courts have defined arrest is to confine or hold any person even for a short time without his desire to be held, against his will. ऐं जेकॾहिं तव्हां नथा चाहियो त तव्हांखे हिन कुर्सीअ ते विहारिजे, कोई माण्हू तव्हांखे हुते तव्हांजी ख़्वाहिश जे उबतड़ तव्हांखे हिते विहारे थो, तव्हांखे फोर्स थो करे, तव्हांखे मजबूर थो करे, दैट इज़ अरेस्ट. ऐं अरेस्ट जा इशूज़ रेज़ थींदा आहिनि ख़ासि तौर ते रिमांड जे केसिस में. जॾहिं रिमांड ईंदा आहिनि त उन्हनि में पोइ हिकिड़ो ॿियो क्रिटिकल पॉइंट रेज़ थींदी आहे जंहिं ते अञा टाइम लॻंदो उनखे वधीक खुलण में या उनखे वधीक इलाज करण में. दैट इज़ यूजुअली कोर्ट जो जेको रिमांड ऑर्डर हूंदो आहे, प्रोडक्शन ऑर्डर जेको थींदो आहे, दैट उन में हिकिड़ो टाइम स्पेसिफाई थियल हूंदो आहे. फलाणी डेट ते 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे हिनखे पेश कयो. ऐं पोइ समटाइम्स उहा कस्टडी पेश थींदी आहे अधु कलाक या कलाक 2 कलाक पोइ. जेको इंटरविनिंग पीरियड आहे कलाक अधु कलाक 2 कलाक, whether that is illegal custody or not, whether that is in violation of Article 10 of the Constitution or not. इन ते डिबेट्स बि थींदियूं आहिनि, इन ते आर्गूमेंट्स बि थींदा आहिनि. आमतौर ते उनखे जेके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आहिनि जस्टिफाई ईअं कंदियूं आहिनि त साईं रस्ते में गाॾी ख़राबु थी पई, तेल खपी वियो, मजबूर हुआसीं या डिफरेंट. एंड शॉर्टर डिलेज जेके आहिनि उहे पोइ कोर्टूं इग्नोर कंदियूं. इहो इन जे करे हुन में टाइम वग़ैरह मैंशन कयो वेंदो आहे टू इंश्योर
that the custody is not kept by the law enforcement agency is in violation of his right in Article 10A. पोइ हिन में अमेंडमेंट्स थियूं आहिनि प्रिवेंटिव डिटेंशन हिकिड़ो वॾो कंट्रोवर्शियल टॉपिक आहे उहा परमिट कई वई आहे इन सर्टन सर्कमस्टांसिस लाइक I think it would be advantageous if we go through every part of this article because it's very important article, Article 10. Says no person who is arrested shall be detained in custody. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. This is very important to understand. When a police officer or when anybody will arrest you, he will not keep your custody without informing you the grounds of arrest, why you are arresting me, why you are holding me. Number two, the other is a safeguard, the extrajudicial confessions न थियनि ऐं प्रोसिक्यूशन जे साम्हूं को मजबूरीअ में का बयान न ॾिए ऐं उन जे लाइ वरी आहे त उनखे राइट ऑफ डिफेंस ऐं कंसल्ट विथ लीगल प्रैक्टिशनर ॾिनो वेंदो यानी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट यू तव्हांखे पुलिस वारो ॿधे थो हू हुनखे ॿुधाइणो आहे तव्हांखे त मां तव्हांखे छो थो ॿधां ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ॿुधाइणो आहे वजह ॿुधाइणी आहे त छो थो ॿधे प्लस उनखे अगरि उहो डिमांड करे त साईं मूंखे वकील सां या लीगल प्रैक्टिशनर सां कंसल्ट करिणो आहे तव्हांजे हिन ग्राउंड जे मुताबिक़ जेको तव्हां मूंखे वजह ॿुधायो था ॿधण जी मूंखे हिन ते कंसल्ट करिणो आहे ही कैन नॉट बी डिनाइड दैट राइट ऐं उनखां इन जे करे एज़ अ सेफ गार्ड काफ़ी मुल्कनि में जॾहिं पुलिस अरेस्ट कंदी आहे उन में पुलिस ॿुधाईंदी आहे त यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट उनखे पहिरियों त ग्राउंड ॿुधाईंदी आहे त यू आर अंडर अरेस्ट फॉर so and so offense in so and so matter and then they inform him that you have right to remain silent if you say or do anything it may be used against you it may or may not be used against you यानी छाकाणि त तव्हांखे हुनजो उते जो उते थॾे ते जाइ वक़ूए ते तव्हां हुनखे लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड नथा करे सघो या उहो लीगल प्रैक्टिशनर अवेल नथो करे सघे त पोइ हुनखे उहो काशन ॾिनो वेंदो आहे दैट इज़ कॉल्ड पुलिस काशन इन इंग्लैंड असां जॾहिं बार कंदा हुआसीं त उते हिनखे पुलिस काशन जी हिकिड़ी वॾी अहमियत हूंदी यानी जेके अक्यूज़्ड काई बि स्टेटमेंट ॾिनी आहे पंहिंजे ख़िलाफ़ु या ॿिए जे ख़िलाफ़ु या कहिड़ी बि जब बयान या का हरकत कई अथई एट द टाइम ऑफ अरेस्ट before giving police caution, that particular part is excluded from evidence. Evidence may admissible no hua. Raise your concern. This was done before the caution was police caution was told him. तव्हां ॾिठो आमतौर ते असां जेके हॉलीवुड जूं मूवीज़ ॾिसंदा आहियूं त हुन में पुलिस वारा अरेस्ट कंदा आहिनि हुनखे ॿुधाईंदा आहिनि यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट एनीथिंग यू डू may or may not be used against you तकड़ में जुड़ो पुलिस वारो चवंदो आहे ॿधण महिल इहो सेम शइ असांजे आर्टिकल 10A में आहे असांजी पुलिस खे बि इहो काशन ॾियणु घुरिजे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट प्लस असांजी पुलिस खे बि जीअं उतां जी पुलिस इंग्लैंड में जीअं आहे त उहा पुलिस लंडन मेट्रोपॉलिटन पुलिस when they arrest any person they tell him the reason for the arrest they give him the caution that if you say anything or do anything that may or may not be used against you. And thirdly, they offer him a legal advisor. Whether you need a legal counsel in the interrogation. उते इंटरोगेशन थींदी आहे उन इंटरोगेशन खां पहिरियों उनखे लीगल एडवाइज़र जी ऑफर थींदी आहे ऐं उहा उनखे ॾिनी वेंदी आहे त जीअं को लेमेन पुलिस जे अहिड़े सुवाल जो अहिड़ो जवाबु न ॾिए जेको उनखे ॻिचे में पइजी वञे बग़ैर कानूनी एडवाइस जे every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within
a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for journey from the place of arrest to the court of the nearest magistrate, and no person shall be detained in custody beyond the said period without authority of the magistrate. यानी जॾहिं बि तव्हांखे अरेस्ट कंदी पुलिस या कोई बि माण्हू त वेझी मैजिस्ट्रेट जी कोर्ट में पेश कंदी 24 कलाकनि जे अंदरि अंदरि उन मां सिर्फ़ु उहो टाइम एक्सक्लूड कबो जेको प्लेस ऑफ अरेस्ट ऐं कोर्ट ताईं पुॼण में लॻंदो यानी जेकॾहिं 10 मिंटनि जी ड्राइव आहे त 24 कलाक ऐं 10 मिंट मथे रखी सघे थो वधीक नथो रखी सघे जेकॾहिं 2 कलाक जी ड्राइव आहे त 26 कलाक रखी सघे थो भले छो न आचर जो ॾियारो हुजे इहा ई वजह आहे त असांखे आचर जे ॾींहं ते ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स जूं ड्यूटियूं लॻंदियूं आहिनि ऐं उहे संडे जे ॾींहं ते रिमांडनि जो कमु कंदा आहिनि त जीअं छाकाणि त छुटी ऐं ओपनिंग डे जे विच ते हिकिड़ो छुटी वारो ॾियारो आहे त उहो 48 कलाक जो गैप आहे हुनखे फिल इन करण जे लाइ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स हूंदा आहिनि जेके हुनखे ॾिसंदा आहिनि ऐं उहा जेका कस्टडी आहे बियॉन्ड दिस 24 आवर्स एंड द टाइम कंज्यूम्ड इन द ट्रेवल टू रीच द फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट उन टाइम खे अनलॉफुल कस्टडी सम्झो वेंदो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हिन में फर्दर ॿी हिकिड़ी शइ आहे यानी आर्टिकल 10 खे इन फ्रीडम खे रिड्यूस कयो वियो आहे in certain circumstances. That is, nothing in clauses 1 and 2 shall apply to a person, any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. Yani, we enacted certain laws after this wave of terrorism in our country. In those laws provided for preventive detention. Yani, he has not committed any offense. इन माण्हू कोई ॾोह कोन कयो आहे पर असांखे ख़दशो आहे त इहो ॾोह करे सघे थो ऐं इहो ॾोह करण में मतां मुलविस थी पवे या मतां इन जे चवण ते को ॿियो ॾोह करे विझे कंहिंखे उकसाए विझे त उनखे प्रिवेंटिव कस्टडीअ में रखियो वेंदो यानी उनजी कस्टडी हूंदी विदाउट एनी ऑफेंस बट इन प्रिवेंटिव लॉज विल देन प्रोवाइड देयर ओन मैकेनिज़म त उहो कीअं एक्सरसाइज कबो पर उहो इन में permissible ahe. And no law providing for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to the integrity, security, and defense of Pakistan or any part thereof, or external affairs of Pakistan, or public order, or the maintenance of supplies and or services. And no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding 3 months unless the appropriate review board has after affording him an opportunity of being heard in person, reviewed his case, and reported before the expiration of said period that there is, in its opinion, sufficient cause for such detention, and if the detention is continued after the period of 3 months, unless appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of each period of 3 months that there is, in its opinion, sufficient cause for such detention. Yani you will make preventive detention laws. That preventive detention law will only be enforceable in few circumstances, like to detain the person who will act in prejudice to integrity, security, defense, public order, supply of goods and services. त पोइ इन सूरत हाल में तव्हां प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सरसाइज करे सघो था कड़ा कानून ठाहे सघो था हर माण्हूअ खे मिसाल ही मूंखे नथो वणे मां हिनखे प्रिवेंटिव डिटेंशन में नथो रखी सघां प्लस तव्हां कंहिंखे बि जॾहिं प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखंदो उहो 3 महीननि खां मथे एक्सीड न कंदी अगरि 3 महीना थियण वारा हूंदा त 3 महीननि जे टाइम पूरे थियण खां पहिरियां रिव्यू बोर्ड में उन शइ खे खयो वेंदो उन में उन माण्हूअ खे अपॉर्चुनिटी ॾिनी वेंदी हेयरिंग जी ऐं पोइ वरी उहो रिव्यू बोर्ड डिसाइड कंदो पंहिंजे ओपिनियन मुताबिक़ त इन प्रिवेंटिव कस्टडी कंटिन्यू कजे या न कजे जॾहिं कंदो त हर 3 महीने खां पहिरियों वरी उहो रिव्यू बोर्ड वेहंदो This article was highly criticized by international humanitarian organizations. It is actually giving a blanket check to the government to detain anybody in an unlawful manner. Although इन में खोड़ सारा limitations provide थियल आहिनि त कहिड़ी कहिड़ी सूरत हाल में प्रिवेंटिव कस्टडी करे सघिजे थी उन जा रिव्यूज़ आहिनि पर
3 महीना कस्टडीअ में रखणु हिकिड़ो मुंहिंजे नज़र में ॾाढो घणो डिघो टाइम आहे। ईअं न हुजणु घुरिजे। इहो इलाही स्टेट जो कमज़ोर हुजण जी निशानी आहे। तव्हां पंहिंजे सब्जेक्ट्स खे एतिरो ख़ाइफ़ आहियो या माण्हू तव्हांजा एतिरा ख़राबु आहिनि जो तव्हां 3 महीना हुन खां पोइ जा रिव्यू बि करे उन अञा कस्टडीअ में रखो लगातार, ऐं तव्हां पंहिंजे मुल्क जी मैनेजमेंट ऐं अवाम खे या उहो जेको चवंदा इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ गुड्स वग़ैरह सर्विसिस तव्हां नथा मैनेज करे सघो। उन खां पोइ उन में फर्दर एक्सप्लेनेशन्स आहिनि। एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड कीअं हूंदो, केरु हूंदो। Say in this article, appropriate review board means in case of a person detained under federal law, a board appointed by Chief Justice of Supreme Court of Pakistan and consisting of a chairman and 2 other persons, each of whom is or has been judge of the Supreme Court or High Court. या जेकॾहिं तव्हां preventive custody under the federal law कयो था, then a review board will be there, and that review board will be appointed by the Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan, and that chairman उन जो जा जेके members हूंदा उहे हाई कोर्ट जा जज हूंदा या सुप्रीम कोर्ट जा जज हूंदा या जेके थी गुज़रिया आहिनि फार्मर या एग्ज़िस्टिंग जजिस। A provincial जेकॾहिं हूंदा in case of a person detained under provincial law, a board appointed by the Chief Justice of the High Court concerned and consisting of a chairman and 2 other judges, each of whom is or has been a judge of the High Court. ऐं सूबाई अगरि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो को कानून आहे त उन में जेको रिव्यू बोर्ड हूंदो उहो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न प्रोविंस अपॉइंट कंदो, ऐं उन में जेके मेंबर्स हूंदा ऐं चेयरमैन हूंदो उहे हाई कोर्ट जा जज फार्मर या एग्ज़िस्टिंग हूंदा। इहे सभु शयूं हुयूं इन में आंदियूं वयूं त जीअं प्रिवेंटिव कस्टडीअ खे रेगुलेट करे सघे। पर हिन में जेका वॾी शॉकिंग मुंहिंजे नज़र में आहे विच militates against the freedom and militates against the so many fundamental rights of a person, association, speech, that is that you have a 3 months, 90 days of custody. It's a long period. The second explanation, the opinion of review board shall be expressed in terms of the views of the majority of its members. 3 माण्हू हूंदा, हिकिड़ो चेयरमैन ऐं 2 ॿिया मेंबर आहिनि, जेको मेजॉरिटी जो व्यू हूंदो उहो ओपिनियन थींदो। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall within 15 days from such detention communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him an earliest opportunity of making a representation against the order. यानी तव्हां जॾहिं प्रिवेंटिव कस्टडीअ में कंहिंखे खणंदव त उनखे विदिन 15 days ग्राउंड्स ॿुधाईंदव, ऐं देन ही विल हैव ए opportunity and right to make a representation against the decision of preventive custody that has been made, provided that the authority making such order may refuse to disclose facts which such authority considers it to be against the public interest to disclose. कि अगर सीक्रेट्स आहिनि जेके सम्झनि था त पब्लिक इंट्रस्ट जे ख़िलाफ़ आहिनि उहे तव्हां भले रीज़न्स डिस्क्लोज़ न कयो। The authority making the order shall furnish in the to the appropriate review board all documents relevant to the case unless a certificate signed by a secretary to the government concerned to the effect that it is not in the public interest to furnish any document is produced. Then the authority जेके बि उनखे अरेस्ट करण जा grounds जा justifications जा documents and they will produce those place before the review board. पर वो न बि करे सघनि था जेकॾहिं secretary to the government signs त बाबा ये secret and they are prejudicial to the public interest. Within a period of 24 months commencing from the day of his first detention in pursuance of an order made under a law providing for preventive detention, no person shall be detained in pursuance of any such order for more than a total of 8 months in case of a person detained for acting in a manner prejudicial to the public order and 12 months in other cases. जाने करे 24 महीना उनखे तव्हां प्रिवेंटिव कस्टडी में रखियो आहे त पोइ उनखे वधीक 8 महीना खां मथे न रखंदो जेकॾहिं उहो पब्लिक ऑर्डर जे ख़िलाफ़
इल्ज़ाम में प्रिवेंट कस्टडी में आहे या 12 महीननि खां मथे न रखंदो कंहिं ॿिए केस में यानी सिक्योरिटी डिफेंस एक्सेस टू प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड गुड्स वगैरह अचे थो वञे त provided that this clause shall not apply to any person who is employed by or works for or acts on instructions received from the enemy or who is acting or attempting to act in a manner prejudicial to the integrity, security, or defense of Pakistan or any part thereof, or who commits or attempts to commit any act which amounts to an anti-national activity as defined in the federal law, or is a member of an association which has for its objects or which indulges in any such anti-national activity. यानी जेका लिमिट आहे 24 महीननि खां पोइ 8 महीना ऐं 12 महीना will not apply to a person who is taken into custody for anti-national activities or taken into preventive custody for the reason of defense of Pakistan or security of Pakistan. The appropriate review board shall determine the place of detention of the person detained and fix a reasonable subsistence allowance for his family. जंहिंखे तव्हां प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करे रखंदव उन्हनि जी उहा प्लेस ऑफ डिटेंशन बि डिटर्मिन कंदो रिव्यू बोर्ड ऐं उन्हनि जी फैमिलीअ जे लाइ हिकिड़ो सबसिस्टेंस अलाउंस बि गवर्नमेंट पे कंदी उनखे फैमिली खे त उहे वरी सर्वाइव कनि जॾहिं कस्टडी में हुजे. Nothing this in this article shall apply to any person for the time being in is an enemy alien. यानी इहा काई बि जेका डिटेंशन वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे अगरि अहिड़े माण्हू ते अप्लाई न थींदियूं जेको एनिमी एलियन आहे. When you enter into a war with any other state or country, then that country or state is declared by the government as enemy country. Once that country is declared as enemy country, then so many of the rights granted to the persons affiliated with the enemy country or citizens of enemy country are curtailed. हे उन हिसाब सां चयल आहे. इन में जेके कस्टडी जा जेके रेगुलेशंस आहिनि प्रिवेंटिव कस्टडी वारी जेके अमेंडमेंट्स वग़ैरह हिन में एड कयूं वयूं दीज आर वेरी सरप्राइजिंग फॉर ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ ऐं वॉइसिस रेज़ कया विया हुया हिन जे ख़िलाफ़ु जॾहिं अमेंडमेंट प्रपोज थी पाकिस्तान में खोड़ सारी बॉडीज़ इंटरनेशनल बॉडीज़ त यार तव्हां कंहिंखे बि एनिमी या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में एलेज करे खणी सघो था उनखे तव्हां डिटेन करे सघो. हिन में जेका कुझु न कुझु माना हिकिड़ी चयो आहे त इवन द इविल हैव सम गुड साइड्स कुझु चङियूं शयूं हर कंहिं शइ में कुझु न कुझु जेके घटि बुरियूं चइजनि त प्रोटेक्शंस प्रोवाइड थियल आहिनि इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू बोर्ड जंहिंमें हाई कोर्ट जा जजिस वेहनि था जो थोरो गवर्नमेंट जी असेसमेंट खे उहे बहितर इवेल्यूट करे सघनि था. उनखां पोइ सिक्योरिटी ऑफ पर्सन आर्टिकल 9 आहे ऐं हिन ते इलाही टाइम लॻंदो. I think we should conclude this lecture today at this discussion. And the next Tuesday we will continue further. Thank you for watching and giving your time.